Infrastructure development is very important for the progress of our country. Presently, for industrial investment, we need good infrastructure, water, power, transport and communication. Without that, we cannot start industry, and without industry, we cannot create employment potential. To create employment potential is the biggest challenge for the country. Presently, we are all facing the crucial problem of COVID-19. But it is not only that we are facing, the whole world is facing. And because of COVID-19, our economy is also facing crucial problems. Now, the most important requirement for Indian economy is liquidity. Without liquidity, we cannot accelerate the wheel of our economy. And for that reason, we need liquidity from FDI. Foreign investment is very important. And in infrastructure, in many sectors, we are trying that how we can get maximum investment. Today, in MSME, in infrastructure, water, power, transport, communication, road sector, everywhere, there is a huge opportunities available. Regarding infrastructure, what my suggestion is, it's my experience of last 6 years as a transport minister. I feel that this is the most economically viable industry because on the basis of toll, the internal rate of return of the project is very good. The land acquisition, utility shifting, forest environment clearance, these are the problems. But now we have already taken a decision that first, without getting 90% land, we cannot award the project. So basically previously we have faced lot of problems because of land acquisition. But presently our 90% land is acquired, and after that we are giving appointment date. So there is no problem related to the land acquisition. Even we are taking all type of appraisals and NOCs and clearances before awarding the project. So either it is forest environment clearance, there are a lot of things. So presently it's a good attractive business for the investor that we have already removed the obstacles in the field. Presently, when I taken as a charge as a minister, our road construction was coming to 2 km per day and average was 7 to 8 km. But now we are making average of 32 km per day. We are making 3 green express highways, 22 green express highway. That one of the highway is already moving very fast, that is Delhi Meerut, where presently it takes 4.5 hours from coming from Meerut to Delhi. But within 6 months it will be 45 to 50 minutes. We can come from Meerut to Delhi. Already the 16-lane road near Swaminarayan Mandir in Delhi is already completed. We are making Delhi-Mumbai Express Highway. It's a very interesting project. We have selected the new alignment. Actually, the present alignment, Mumbai, Ahmedabad and Delhi, near to the road. In place of that, we have selected the new alignment started from Sona, going to Savai Madhopur, Alwar, then Jhabua, Ratlam, and then it goes to Vadodara to Mumbai. So we saved 220 kilometer distance by this new alignment. It's a green alignment. And land acquisition cost point of view, we save 16,000 crore. Near to Ahmedabad and Surat, there is a land acquisition rate average, it comes to 3 crore rupees per acre. But because of this area where we are starting this highway, it is backward and tribal area of Haryana, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. So our land acquisition cost rate come to 10 to 20 lakhs rupees per acre. So already there is a saving of 16,000 crore in the project. Now the idea is we want to make logistic park, industrial clusters, smart cities, smart villages across the road. And definitely we will take the responsibility to connectivity of this industrial cluster logistic park to ports, airports and railway stations.
that responsibility is with NHI. We will do it. So presently in the infrastructure, the most important problem is logistic cost. As compared with USA and China, our logistic cost is very high. We need to reduce this logistic cost. So first of all, now presently, from Mumbai to Delhi, the truck is taking some 3 days for going from Mumbai to Delhi. But now by this highway, it will be possible for a truck to go with 26 or 28 hours. Now you can take your car from Mumbai to Delhi by 12 to 12 and a half hours, because you can easily go by the speed of 100 kilometer, 120 kilometer, no problem. So presently there is a huge potential actually for business point of view, for industrial clusters point of view. We need to reduce logistic cost, that is very important. The other important decision we as a transport minister we have already taken, that convert our transport on LNG, long transport, trucks and buses. LNG's rate is very cheap. So as compared with diesel, there is a saving of at least 60%. So LNG rate is very reasonable, less pollution, and now for that reason we need to change from diesel to LNG. We have to make some investment in it. For conversion of truck and bus, it takes at least 8 to 10 lakh rupees to convert on LNG. But within 2 years, you will get your money back. So definitely, transport point of view, how we can reduce the fuel cost is the most important thing for all of us. Even in Delhi-Mumbai highway, we are making a pilot project of electric pilot project where truck and bus can go with electricity, using electricity as a fuel. So my suggestion is presently in infrastructure, there is a huge potential. Wow, maximum people are purchasing cars. But in place of that, we need public transport and with good comforts and on alternative fuel. Even we can reduce the ticket rate by 25 to 30% by changing fuel. So if the electricity is the fuel, it can be also a great opportunity for all of us, that the cost is very, very, very less. I just purchased one SUV, electric SUV, and now our petrol expenditure was 12 to 13,000 rupees per month. Now it comes to 6 to 800 rupees per month. We can charge that e-vehicle in my parking area. Even anywhere we can go in a house connection also we can charge. So there is a huge potential now for making transformation of transport from petrol, diesel to electric, ethanol, methanol, bio CNG, electric. These are the future. Even we are working on hydrogen fuel cell. So these are the future opportunities. So infrastructure, either it is public transport, road sector, even in aviation also, the government is making 100 new airports. Now we have lot of potential for amphibious seaplane. Even in Ganga also we have completed waterways from Varanasi to Haldia. Then Allahabad to Varanasi 1 meter draft is, that work is also completed. Then from Haldia, Calcutta, it goes to Bengal Sea going to Brahmaputra, then direct going up to Myanmar and Bangladesh, we can use waterways. Now we have already submitted the DPR from making waterways from Delhi in Yamuna. After Delhi it going to Mathura, Mathura to Agra, Agra to Etawah, and Etawah to Allahabad. So the things are moving fast. Technology are available. Even in road construction now we want to use precast technology. We are now encouraging green technology, particularly soil stabilizing technology for making road construction. So new innovation, new technology are open. I feel that this is the appropriate time where there is a huge potential for development of infrastructure in the country. The Prime Minister's dream is making Indian economy of $5 trillion within 5 years and making infrastructure of 100 lakh crore. It is a great challenge, and we are in railway, aviation, waterways, CA ports, everywhere the things are moving fast. I am only giving you an example how it can be possible. Last 5 years I was responsible for port shipping and waterways.
my budget was only 400 crore. So in 5 years, it comes to 4,000 crore. Budget was 800 crore. So it comes to 5 years budget comes to 4,000 crore. But we have taken Sagar Mala as a project of 16 lakh crore. And in that 5 years, we have completed projects cost more than 6 lakh 50,000 crore. With the PPP model, BOT model, different type of model by using public-private investment in the project. Now our 12 major port efficiency is increased by 2 times, and at the same time the capacity is double, and now we have good ports of international standards. So with the public-private investment, we can make airports, we can change railway, we can make railway station, we can make bus ports, we can make logistic parks, we can lot of initiative government has already taken. But presently we are facing the crisis of COVID-19, and that is one of the reasons that all people, all stakeholders are facing crucial problem. But my confidence is now today we need positivity and self-confidence, because there is negativity and frustration that is really a big problem for the country. So this is the time for all stakeholders to create positivity, sakaratmakta, and at the same time self-confidence in the mind of the people. We are the fastest growing economy, and I am confident that 100% the world economic situation is also very favorable to us. Now the world is more interested to deal with India, and in a situation it is a blessing in disguise that we need to take the advantage of the situation and go ahead. This is a temporary phase. I am confident in due course of time we will get the vaccine, we will free from this COVID-19, and 100% we will march ahead. So for the infrastructure point of view, there is a huge opportunity available for private sector, either for construction, either for investment, either for PPP models, or even there is a huge potential where we can get the advantage of it. I am giving my all best wishes to you. My priority is we want to award the road construction of 15 lakh crore in 2 years. It's a big challenge. It's my target. I'm not giving commitment for that. But the way in which we are moving, we are taking decisions, I'm confident that we will encourage the infrastructure projects in the country. Even the railway, aviation, they are also moving fast. And the most important thing that what liquidity we will get it from the infrastructure project, that is going to create good employment potential in the country. That is going to accelerate the wheel of our economy, because this liquidity will support us even for accelerating our economy is very, very important. I feel that this is the appropriate time for all of us to take the advantage of the situation, and 100% I am confident that we will get the benefits from that. Once again, I am giving my all best wishes. Thank you very much. Namaskar. You can ask me the question. I will try my level best to answer your questions. Thank you. Sir, one question that many people have asked is, what is the stand of the ministry on claims for COVID? Force majeure, is it political, non-political? What is the stand of the ministry, sir? Already we have formulated the policy. We are giving advantage to the contractors, toll collector, and already decisions are issued and people are already getting benefits of that. Okay. Sir, next question, sir. What is your target for the next 2, 3, or 4 years as you look ahead? Now we are in the process of making of 22 green express highways. Out of which 7 highways of work has already started. So these are the green alignment. We want to start this highway. Then we are also having lot of projects, 480 projects, where internal rate of return is good. The cost of the project is coming to 8 to 9 lakhs. We want to move fast. We want to award that project, the land acquisition, all the things we are doing. Then we want to make logistic parks, bus ports, then industrial clusters. We are planning for that, making petrol and gas stations. So with new innovative idea, with our policy is very transparent, time bound, result oriented, and corruption free. So we are supporting the all industry for new innovations which we are already implementing, and there is a huge potential,
And we have got a lot of models, BOT model, PPP model, hybrid annuity model, EPC model. On the basis of that, we can work. Now we are trying to get FDI because in infrastructure 100% FDI is allowed. We are trying to get, because we need to reduce our capital cost. Our interest cost is very high in Indian scenario. So we are trying to get insurance. अभी हमारा एक ही संकल्प है कि जो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी की नेतृत्व में एक बार सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात बाद में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम से अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थन। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि जो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात बाद में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम से अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं है, पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थन। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि जो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात बाद में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम से अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए। पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थन। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि जो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात बाद में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम से अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थन। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि जो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात बाद में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम से अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए। पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थन। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि जो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात बाद में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम से अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थन। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि जो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी की नेतृत्व में एक बार सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात बाद में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम से अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि जो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात बाद में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम से अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थन।
देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि मुझे लिखा हुआ है कमलनाथ जी की नेतृत्व में वह सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम के अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? यदि पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि मुझे लिखा हुआ है कमलनाथ जी की नेतृत्व में वह सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम के अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? यदि पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। अभी हमारा एक ही संकल्प है कि मुझे लिखा हुआ है कमलनाथ जी की नेतृत्व में वह सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम के अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? यदि पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि मुझे लिखा हुआ है कमलनाथ जी की नेतृत्व में वह सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम के अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? यदि पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि मुझे लिखा हुआ है कमलनाथ जी की नेतृत्व में वह सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम के अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? यदि पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। अभी हमारा एक ही संकल्प है कि मुझे लिखा हुआ है कमलनाथ जी की नेतृत्व में वह सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम के अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? यदि पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि मुझे लिखा हुआ है कमलनाथ जी की नेतृत्व में वह सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम के अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? यदि पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि मुझे लिखा हुआ है कमलनाथ जी की नेतृत्व में वह सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम के अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? यदि पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। देखिए अभी हमारा एक ही संकल्प है कि मुझे लिखा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में वह सरकार फिर बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार कलेक्टर इन सब की बात में करेंगे। सर जी आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम के अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं।
But now the उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, अब पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है, पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए। जीतू पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। देखिए, अभी हमारा एक ही संकल्प है कि तो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में युवा सरकार से बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार, कलेक्टर, इन सब की बात करें। शर्मा जी, आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम से अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, अब पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है, पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए। जीतू पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थन। देखिए, अभी हमारा एक ही संकल्प है कि तो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में युवा सरकार से बनाना है। बाकी पटवारी और तहसीलदार, कलेक्टर, इन सब की बात करें। शर्मा जी, आप आरोप लगा रहे हो कोरोना पे सीएम से अंदर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि राजा नहीं, राजा व्यापारी नहीं, अब पटवारी चाहिए। तो क्या लगता है, पटवारी जी के लिए नारे लग रहे हैं कि अब राजा और व्यापारी नहीं बल्कि पटवारी चाहिए मध्य प्रदेश के लिए। जीतू पटवारी जी के लिए नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थन। देखिए, अभी हमारा एक ही संकल्प है कि तो ये लिखा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में युवा सरकार से बनाना है।